गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम टॉपिक लेंगे कि दैट इज़ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन? सो इन दैट we will see the Mohr's method, Volhards method, modified Volhards method, then Fajans method, then estimation of the sodium chloride. And again we will see the different indicators which are used for this method, precipitation titration, as well as the some little bit comparison between the Mohr's method, Volhards method, and the modified Volhards method and Fajans method. So this is the differentiations also we will see one by one. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, तो अब देखो यहीं पे इस वर्ड में ही हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन व्हाट इज मीन बाय। ओके, तो प्रेसिपिटेशन क्या रहता है, जो भी हम जब टाइट्रेशन करते हैं, ओके, तो कोनिकल फ्लास्क में प्रेसिपिटेट तैयार होता है। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टोटल सॉल्युबिलिटी मीन्स इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट रहता है दैट इज द प्रेसिपिटेशन, सिंपल लैंग्वेज। ओके, सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज द it is a type of titration which involves the formation of precipitate. See, formation of the precipitate जहाँ पे तैयार होता है during the titration technique is called as precipitation titration. In a precipitation titration, the titrant reacts with the analyte. Titrant reacts with the analyte. अभी titrant क्या रहता है, जो कि हम ब्यूरेट में लेते हैं, समझे, और एनालाइट क्या है, जो कि हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, एंड फॉर्म्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, इट कंटिन्यूज टिल द लास्ट अमाउंट ऑफ द एनालाइट इज कंज्यूम्ड। जब तक लास्ट एनालाइट मीन्स स्टैंडर्ड आपका कंज्यूम नहीं होता वहाँ तक इट विल बी कंटिन्यू। सो सेकंड थिंग्स, सिल्वर नाइट्राइट। सी, ये ध्यान में रखिए आप, सिल्वर नाइट्राइट AgNO3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेनली यूज्ड एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। आपको ये ध्यान रखना है, सिल्वर नाइट्राइट इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेनली यूज्ड एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। टाइट्रेशन इन विच द यूज सिल्वर क्लोनाइट्राइड एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज कॉल्ड एज एर्जिनेटियोमेट्रिक टाइट्रेशन। जहाँ पे सिल्वर नाइट्राइट यूज होता है प्रेसिपिटेटिंग एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, हम उसे क्या बोलते हैं, एर्जिनेटियोमेट्रिक टाइट्रेशन। What are the different applications of that? It is used in the determination of the chloride, bromide and the iodide ions. ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? It is used in chloride, bromide and iodide ions slightly or in a mixture by precipitation of the silver salt, slightly on or in a mixture मीन्स सिंगल भी यूज कर सकते हैं हम या मिक्सचर में भी यूज कर सकते हैं बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अभी ये कौन से चीज पे चलता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन? सो द मेन प्रिंसिपल of the precipitation titration is that is the quantity of the added precipitating agent. quantity जो भी रहता है added precipitating agent और precipitant, okay, is equivalent to the substance being precipitated. हमने जितना ऐड किया था उतना हमें precipitate आ रहा है क्या, ये हमें चेक करना है। सो quantity added as that equivalent to the substance being precipitated. This is the principle. Again, once it is depends on the precipitation titration mainly based on the solubility of the product. Solubility पे depend रहता है, ये ध्यान रखिए। That is the principle of the precipitation titration. According to the end point detections method, there are according to the end point detections. Precipitation titration में क्या है, there are different endpoint determinations are there and on the that basis we will conclude that there are three
sorry, there are three methods we are using for that. See, first is the Mohr's method, then Volhards method and Fajans method. So we will see one by one. First, see, this is the Mohr's method. The scientist name is Carl Friedrich Mohr. They developed this method. According to that, the precipitation titration, in which the silver ion is used as a titrant. सिल्वर आयन टाइट्रेंट यूज़ किया है हमने, और क्रोमेट आयन एज ए इंडिकेटर इज कॉल्ड एज मोर्स मेथड. सिंपल ध्यान रखना है हमें. सिल्वर आयन क्या है? टाइट्रेंट है. एंड क्रोमेट आयन क्या है? इट्स अ indicator. So it's called as Mohs method. This method is applicable for quantitative analysis of the halide ions. Different halide ions are there. See, chlorine, example chlorine hai, bromine hai, iodine hai. These are the halide ions, and these halide ions quantitative analysis कौन कर सकता है? This Mohs method. So in this method, sodium chloride, see, this is the NaCl, titrates with the silver nitride. सोडियम क्लोराइड टाइट्रेट करते हैं by the silver nitride. As a silver nitride solution is slowly added. Okay, NaCl silver nitride solution is slowly added to the mixture sodium chloride, but the precipitate of silver chloride forms. After addition of this, we will get the silver chloride ion simply. The end point क्या है अभी? The end point of the titration occurs when all chloride ions are precipitate. Then जब आपके क्लोराइड आयंस का ऑल क्लोराइड आयंस प्रेसिपिटेट कंप्लीट हो जाता है, तभी हमारा एंड पॉइंट इज कंप्लीटेड. देन एडिशनल सिल्वर आयंस रिएक्टेड. उसमें जो भी एडिशनल सिल्वर आयंस रहते हैं वो रिएक्ट्स किससे होते हैं? It reacted with the potassium chromate to form a reddish brown precipitate of the silver chromate. See this reaction. Silver nitride reaction with the potassium chromate, when it is gives silver chromates. That is the additional जो भी सिल्वर आयंस रिएक्ट्स होता है इसके साथ, और ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिलता है. अभी दिस इज मेथड प्रिंसिपल्स, व्हाट इज द एग्जैक्टली फॉर्म्स एंड ऑल थिंग्स. सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मोर्स मेथड? कौन से भी चीज़ को एक लिमिटेशन रहता है. सो मोर्स मेथड का लिमिटेशन क्या है? इट इज अलाउज ओनली 6.5 एंड 10. इट अलाउज ओनली 6.5 एंड 10 pH रेंजेस. ओके, बिलो 6.5 देयर इज इंक्रीज्ड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट. अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है तो हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. सो बिलो 6.5 इट इज़ नॉट गुड फॉर एप्लीकेशन. एंड अबाउट 10 एंड पॉइंट कम्स टू लेट एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज आल्सो प्रेसिपिटेटेड. अबाउट 10 भी प्रॉब्लम है. दैट्स वाई दिस आल्सो वन टाइप ऑफ लिमिटेशन. If the solution is alkaline, make it acidic with the nitric acid, then neutralize it by adding a sodium bicarbonate or borax. यहाँ पे भी है, if solution alkaline रहेगा, it make it acidic. First of all उसे acidic करना पड़ेगा with the nitric acid, then neutralize करना है by adding sodium bicarbonate. If appreciable amount of the ammonium salt are present in the pH should not be exceed 7.2. Sorry. In reverse titration, iodide and bromide cannot be titrated. So these are the different limitations of these Mohr's methods, they concluded. So next we will go towards the Volhards method. The scientist name is Jacob Volhards. They discovered this method. According to the Volhards method, यहाँ पे क्या है? सिंपल चीज़ है कि सिल्वर आयंस इज प्रेसिपिटेटेड बाय द थायोसाइनेट आयंस. यहाँ पे एक डिफरेंस है, ठीक है. Precipitation titration in which silver ions is precipitated by the thiocyanate ions in the presence of indicator. क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? फेरिक आयंस इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे इन एसिडिक मीडिया. सो इट इज़ कॉल्ड एज Volhards मेथड. ये ऐसा ही सिंपल आपको ध्यान रखना है
कि सिल्वर कौन सा हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और कौन सा हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे तो आपको लिखने आ जाएगा एग्जाम में. So this called as Volhards method. Also this method is used to determine the concentration of silver ions or concentration of halide ions. Okay, halide ions हमने देखा, chlorine, bromide, chloride, bromide, iodide. So in this method there is a formation of colored compounds at the end point. Colored compound तैयार होता है end point पे. Silver ions is titrated with the thiocyanate in an acidic solution. Thiocyanate acidic solution using a ferric ion as a concentration. Silver ions, that is Ag plus, is reacted with the titrated with the thiocyanate SCN. It will give the silver thiocyanate by using a ferric ion as an indicator. Initially the silver thiocyanate, see this is the silver thiocyanate, is precipitate होता है पहले, ठीक है. After that equivalence point, when silver is present, okay, the excess of thiocyanate added reacts with the ferric ions to give the reddish brown ferric thiocyanate. जो भी एक्सेस थायोसाइनेट रहेगा उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, फेरिक आयंस के साथ, और उसके बाद क्या मिलेगा हमें, रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट्स वी विल गेट एज अ प्रेसिपिटेट. अगेन सी द रिएक्शन, ferric ions is reacted with the excess amount of silver thiocyanate, and it will give the ferric thiocyanate. So these are the two reactions we need to understand and write in exams during the, if you are asking the this method for exam. Okay, next this is the Volhards method, and now we will go toward the modified Volhards method. अभी इसमें modification क्या किया है Volhards ने मेथड्स में. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड को ही हम कोल्ड वेल्स मेथड बोलते हैं, कोल्ड वेल्स मेथड. स्पेशली सोडियम क्लोराइड एंड KCl's आर डिटरमाइंड फॉर दिस मेथड. सोडियम क्लोराइड एंड KCl's ओनली डिटरमाइन. इन दिस केस chloride it is usual to the filter. Chloride only will need to filter of the silver chloride or a coagulant of the precipitate by means of either dibutyl phthalates preferred or nitrobenzenes also we can prefer. The excess of silver nitride is back titrated with the potassium or ammonium thiocyanate using a ferrium alum as indicators. यहाँ पे ferrium alum indicator use कर सकते हैं. The nitrobenzene or dibutyl phthalate, see here nitrobenzene dibutyl phthalate is added to the coagulant silver chloride precipitate so that it will not interfere with the titration of the excess of silver nitride. Excess of silver nitride में इसका interference नहीं होगा by forming a layer of silver chloride, by forming a layer of silver chloride, and this avoids the need of to the filtration. यहाँ पे हमें फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि उनका म्यूचुअली इंटरफेरेंस नहीं होगा बीच में. सो एग्जांपल क्या हम बोल सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम थायोसाइनेट. ओके, so this is the example of this modified Volhards method. Now we will go toward the Fajans method. What is the Fajans method? The precipitation titration in which सिल्वर आयन, सी सिल्वर, जहाँ इस पूरे चैप्टर में ना सिल्वर आयन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. सिल्वर आयन्स टाइट्रेटेड विद द हैलाइड्स और थायोसाइनेट आयन्स, ठीक है, हैलाइड्स भी है और थायोसाइनेट आयन्स भी इन द प्रेजेंस ऑफ एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स इज कॉल्ड एज फजान्स मेथड. The method is generally used for the quantitative analysis of halide ions or thiocyanate ions. यहाँ पे हम halide ions भी देख सकते हैं और thiocyanate ions भी हम चेक कर सकते हैं. Fajans method is based on the adsorption of the indicator. See, क्योंकि हम adsorption as indicator यूज करें तो adsorption of indicators we are using for that. Adsorption of indicators are adsorbed by the precipitate, and during the process of adsorption changes occurs in the indicators. During this process we will get the changes, कुछ changes यहाँ पे मिलेंगे हमें, which leads the substances of the different colors, hence they are termed as absorption indicators. For example, fluorescence, see, for example fluorescence and its a derivative fluorescence
and its derivatives are adsorbed to the surface of colloidal AgCl, that is silver chloride. After all chloride is used, the first drop of silver will react with the fluorescence and forming the reddish color precipitate, that is silver fluoride. Okay, this is the examples of the Fajans method. Now, after completion of these all methods, we will go towards there are different absorption indicators we are using for Fajans method. सी अभी एब्सॉर्प्शन मेथड्स इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो फ्लोरोसिन्स है, ईओसिन है, ओके, फ्लोरोसिन्स, ईओसिन्स, then diiodomethyl fluorescence, then dichlorofluorescence. These are the different indicators we are using in a Fajans method. And color changes कैसे रहेंगे इसके अकॉर्डिंग, सी फ्लोरोसेंस का येलो ग्रीन टू पिंक है, ऑल हाइलाइट्स एप्लीकेशंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ pH रेंजेस टू 7 to 10. ईओसिन में क्या करेंगे हम, पिंक टू रेड वायलेट रहेगा, यहाँ पे सैम्पल मस्ट नॉट बी कंटेन्स द pH okay less than 1. Then diiodomethyl fluorescence, that is orange to blue होगा यहाँ पे कलर चेंजेस, and iodine only, that is pH 4 to 7. Dichlorofluorescence yellow green to red, that is chlorine and bromine, pH 4.7. ये हम absorption indicators, different absorption indicators हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड. कंपैरिजन क्या रहेगा, सी देर आर 3 मेथड्स वी आर कंप्लीटेड ऑलरेडी, सो व्हाट इज द डिफरेंट कंपैरिजन ऑफ दिस मेथड. सी हियर वी आर गिवन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड दीज आर द मेथड, डिफरेंट 3 मेथड्स. मोहर्स मेथड, इट्स एडवांटेजेस क्या है, इसका सिंपल है. मोहर्स मेथड इज सिंपल. एडवांटेजेस क्या रहेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशंस ओनली, नॉट सुटेबल फॉर आयोडाइड, required blank. Okay, alkaline solutions only, not suitable for iodide, and required a blank for the Mohr's method. This is disadvantages, sorry. Next, Fajans के बारे में क्या है, advantages, capability for the different pH ranges and selective with the different indicators. यहाँ पे different pH range के इसमें हम कर सकते हैं, और selective with different indicators also we can use in a Fajans method. And disadvantage क्या है, फजन्स का, डिफिकल्ट टू द डाइल्यूट सॉल्यूशंस, शुड नॉट बी हाई बैकग्राउंड आयोनिक लेवल्स. वोलार्ड्स में क्या है, कैपेबल ऑफ द डायरेक्ट सिल्वर एंड द इंडिकेटर्स इनडायरेक्ट हेलाइड एनालाइट्स, वेरी क्लियर कलर चेंजेस. दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस. और इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, वोलार्ड्स का मस्ट बी 1 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन चाहिए, कंपलसरी चाहिए 1 मोलर नाइट्रिक एसिड, and some problems with the specific anions. So this table, आपको ये टेबल है ना पूरा ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ से आप है ना सिंपल लिख सकते हैं मोहर्स के बारे में, फजान्स के बारे में, वोलार्ड्स मेथड के बारे में, सिंपली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के रिगार्डिंग. So there are some limitation of this precipitation titrations is that a few number of ions such as halide ions, that is chlorine, bromine and iodines, can be titrated by the precipitation method. Other than that, there is not possibility to titrate. Only chlorine, bromine and iodine is we can try to precipitate. Co-precipitation में भी एक और precipitation तो तैयार होगा, फिर भी co-precipitation also तैयार हो सकता है. यहाँ पे it is very difficult to detect the end point. और यहाँ पे कैसे रहता है, अभी देखो जैसे कि हमने प्रिंसिपल देखा, इट इज़ डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग. सो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ऑल्सो कि हमारा एंड पॉइंट आया है या नहीं आया है. सपोज सॉल्युबिलिटी और भी कोई प्रोडक्ट रहता है, थोड़ी देर बाद इनसॉल्युबल हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकते कि दैट्स वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट. सो दिस इज द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. सो वी आर कंप्लीटेड फॉर अ टॉपिक. तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, डिफाइन द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, देन different methods, what are the methods for the precipitation titrations, okay, what are the limitations of that, advantages of that, okay. So they simple यहाँ पे questions आ सकते हैं एग्ज़ाम में. so जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोस्ट more important videos,
एंड बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कीजिए, सो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको आ जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. थैंक यू.